हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियोस। इस वीडियो में हम नॉर्मल्स करेंगे। कॉनिकॉइड का चैप्टर हम कर रहे हैं, सेंट्रल कॉनिकॉइड्स। सो हमें फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कॉनिकॉइड। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कॉनिकॉइड। तो जैसे कि हमें पता है कॉनिकॉइड की इक्वेशन ax² प्लस by² प्लस cz² इज इक्वल टू 1। ये जनरल इक्वेशन हम ले रहे हैं। अब पॉइंट ले रहे हैं एट अल्फा बीटा गामा। कॉनिकॉइड ax² प्लस by² प्लस cz² इज इक्वल टू 1 एट अल्फा बीटा गामा। अगर नहीं दिया गया है ये पार्ट, दिस पार्ट, इफ इट इज नॉट गिवन देन यू हैव टू टेक योरसेल्फ द इक्वेशन ऑफ the tangent plane to the conicoid at alpha beta gamma is, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, a alpha x प्लस b बीटा y प्लस c गामा z इज इक्वल टू 1। सो हम इसे नंबर 1 मार्क कर देते हैं। अब हमें रिक्वायर्ड नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए। तो वो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी? एट दिस पॉइंट अल्फा बीटा गामा वो 90 डिग्री पर होगी टेंजेंट प्लेन के। सो हमें दैट इक्वेशन चाहिए। सो द रिक्वायर्ड नॉर्मल इज ए लाइन थ्रू पॉइंट है अल्फा बीटा गामा एट 90 डिग्री और राइट एंगल टू द टेंजेंट प्लेन्स गिवन बाय 1। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गई x माइनस अल्फा अपॉन ए अल्फा इज इक्वल टू y माइनस, मतलब इस अल्फा बीटा गामा पॉइंट से पास हो रही है, इक्वल टू z माइनस गामा अपॉन z गामा, एंड हुज डायरेक्शन रेशियोज जो हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड हैं, हुज डी आर्स आर ए अल्फा बी बीटा एंड सी गामा। अब मान लेते हैं क्योंकि ये हम कॉनिकॉइड की बात कर रहे हैं तो p जो है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है फ्रॉम द ओरिजिन टू द टेंजेंट प्लेन एंड टेंजेंट प्लेन इज गिवन बाय 1। सो p जो है लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द टेंजेंट प्लेन गिवन बाय 1। तो हम लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 1 अपॉन, क्योंकि 0 0 0 से तो -1 ओनली हेयर इट विल बी -1 विच बिकम्स +1 इन न्यूमरेटर अपॉन l² प्लस m² प्लस n²। सो ये अल्फा² प्लस b बीटा² प्लस c गामा स्क्वायर। क्योंकि जैसे हम जानते हैं एक्स वाई जेड पॉइंट से अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करें तो दैट विल बी ax1 प्लस बी वाई 1 प्लस सी जेड 1 प्लस डी अपॉन अंडर रूट a² प्लस b² प्लस c²। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन। दिस प्लेन इज ऑफ दिस फॉर्म। व्हेन वी ब्रिंग इट हियर दिस बिकम्स d which is -1, but this will be positive because this is a length and length cannot be negative. So we can write down a alpha p square by taking square of this plus b beta p square plus c gamma p square is equal to 1, and we mark it 2 and this is 3. From 2 and 3 we can conclude that direction cosines of the normal to conicoid are from 2 and 3. The DCs of the normal to the conicoid at alpha beta gamma are a alpha p, b beta p and c gamma p. And also if we take that if normal
at alpha, beta, gamma, which is given by, of course, equation 2, passes through the point x1, y1, z1 and say this point is fixed point, then it will lie on the normal. If normal passes through a fixed point x1, y1, z1, so this point will lie on normal, and normal is x minus alpha upon a alpha. So x1 minus alpha upon a alpha is equal to y1 minus beta upon b beta is equal to z1 minus gamma upon c gamma. And let's say it is equal to r. So from here we can find out x1, and from that we can find out value of alpha in terms of x1, and value of y, value of beta in y1, and value of gamma in z1. So we'll get the point alpha, beta, gamma, which we can substitute in the equation of conicoid, because this point lies on conicoid. So x1 minus alpha upon a alpha is equal to r. It gives x1 is equal to a alpha r plus alpha. We take alpha common, 1 plus ar is equal to x1. So alpha is equal to x1 upon 1 plus ar. Similarly, beta is equal to y1 upon 1 plus br, and gamma is equal to z1 upon 1 plus cr. And this point lies on equation of conicoid ax square plus by square plus cz square is equal to 1, and this will be alpha square plus b beta square plus c gamma square is equal to 1. So we put the values a x1 upon 1 plus ar whole square plus b y upon 1 plus br whole square plus c z1 upon 1 plus cr whole square is equal to 1. And now if we see, in denominator r is there and each is in square, so if we cross multiply, this equation will be in r6, and equation is of 6th degree. And therefore there will be 6 values of r. It means 6 normals, because depending on value of r we will have different values of alpha, beta, gamma and normals. So 6 normals can be drawn to a conicoid from any point. And if this conicoid is ellipsoid and equation is of this form, then the equations of the normal to it at alpha, beta, gamma will be x minus alpha upon, this will be alpha upon a square is equal to y minus beta upon b square is equal to z minus gamma upon c square. And here actual DCs of normal are p alpha upon a square, p beta upon b square, p gamma upon c square, जैसे हमने पिछले केस में किया same. And if we square them and add, then this will be equal to 1. So p alpha upon a square plus p b whole square, p beta upon b square whole square plus p gamma upon c square whole square is equal to 1. L1 square plus m1 square plus n1 square is equal to 1. So from here we can find out value of p. So p square into alpha square upon a4
plus beta square upon b4 plus gamma square upon c4 is equal to 1. So p is 1 upon under root alpha square upon a4 plus beta square upon b4 plus gamma square upon c4. This is the length of perpendicular from origin to the tangent plane. And tangent plane will be here. Tangent plane is alpha x upon a square plus beta y upon b square plus gamma z upon c square is equal to 1 at alpha beta gamma, and ये ellipsoid पर है. So this is the perpendicular distance from the origin to the tangent plane. एग्जाम्पल कर लेते हैं. एग्जाम्पल 1, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स of intersection of the coordinate planes and the normal at P, which is alpha beta gamma, to the ellipsoid. X square upon a square plus y square upon b square plus z square upon c square is equal to 1. So हमें नॉर्मल की इक्वेशन पता है. एलिप्सॉइड पर पॉइंट p अल्फा बीटा गामा अभी हमने कैलकुलेट की, वो आ जाती है x माइनस अल्फा अपॉन p अल्फा अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस बीटा upon p beta upon b square is equal to z minus gamma upon p gamma upon c square, let's say, is equal to r. ये जो है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द, दिस इज ellipsoid 1. at the point P alpha beta gamma. R जो डिनोट कर रहा है वो डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द नॉर्मल फ्रॉम द पॉइंट P alpha beta gamma. अब हम मानते हैं कि ये जो नॉर्मल है जो कि P पर ड्रॉ किया गया है वो कोऑर्डिनेट प्लेन्स को मीट करता है. लेट द नॉर्मल एट P मीट द कोऑर्डिनेट प्लेन्स YZ, ZX and XY. एंड इन पॉइंट्स को हम मार्क कर देते हैं एट G1, G2 एंड G3, जिन पॉइंट्स पर मीट करता है नॉर्मल. और अगर मीट कर रहा है तो उन केसेस में x 0 होगा या y 0 होगा या z 0 होगा. देन पुटिंग this one by one in succession
on the equation of the normal. In the equation of the normal. तो रेस्पेक्टिवली हमें क्या मिलेगा? देन वी हैव Pg1 इज इक्वल टू माइनस, अब G1 है तो हमने y एंड z को 0 सब्सटीट्यूट किया, सो दिस गिव्स Pg1 minus a square upon p. Then putting x is equal to 0, y is equal to 0 and z is equal to 0 all together but in succession in the equation of normal. तब क्या होगा हम देखें तो r तो डिस्टेंस है जो कि पॉइंट p, नॉर्मल एट p मीट द कोऑर्डिनेट प्लेन्स, ये हम डिस्टेंस ले रहे हैं. सो दिस इज Pg1 बिकॉज फर्स्ट टाइम ये G1 से मीट करता है. सो दिस विल बी इक्वल टू, अगर हम तीनों में ज़ीरो रखें एक्स वाई जेड बट इन सक्सेशन, तो फर्स्ट से मिलता है हमें एक्स माइनस दैट इज ज़ीरो माइनस एल्फा अपॉन पी एल्फा अपॉन ए स्क्वायर. सो एल्फा एल्फा कैंसल्स आउट, सो माइनस ए स्क्वायर अपॉन पी. सिमिलरली नेक्स्ट टाइम जब वाई वाला केस लेते हैं, then we get Pg2, it gives minus b square upon p. The normal at p meet the coordinate planes yz, zx and xy planes at g1, g2, g3. तो अगर हम इसमें x को 0, y को 0, z को 0 रखें तो पहले केस में हमें Pg1 obtain होगा बिकॉज r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट ऑन द नॉर्मल एंड p पॉइंट. सो Pg1 विल बी फ्रॉम फर्स्ट टर्म हेयर एंड हेयर माइनस ए स्क्वायर अपॉन पी, और ये ऐसे आएगा अगर हमने ज़ीरो रखा माइनस एल्फा अपॉन पी एल्फा अपॉन ए स्क्वायर. सो एल्फा एल्फा कैंसल्स आउट, माइनस ए स्क्वायर अपॉन पी. Pg2 इज माइनस बी स्क्वायर अपॉन p, Pg3 माइनस सी स्क्वायर अपॉन p. तो अगर हम 1 अपॉन p स्क्वायर फाइंड आउट करना चाहें, बिकॉज वी नीड टू फाइंड आउट दिस 1 upon p square is where 1 upon p square is how much? This we had seen from the article is equal to alpha square upon a square. अभी हमने आर्टिकल में किया था बीटा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. सो p तो कॉमन है, इसका मतलब अगर हम रेशियो देखें इन तीनों में Pg1 is to Pg2 and Pg3, तो ये बराबर होगा a स्क्वायर is to b स्क्वायर is to c स्क्वायर. तो क्वेश्चन में हमें पूछा गया था फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन्स. तो कोऑर्डिनेट प्लेन्स पे G1, G2, G3 इंटरसेक्टिंग है, जहाँ की नॉर्मल इंटरसेक्ट कर रहा है. कोऑर्डिनेट प्लेन्स एंड द नॉर्मल एट P to the ellipsoid. So that is Pg1, Pg2, Pg3 and this will be in the form of ratio and this is what was required. So this is required answer. ये एग्जाम्पल 2019 में IAS के एग्ज़ाम में आया है. सो एग्जाम्पल है फाइंड द लेंथ ऑफ द नॉर्मल कॉर्ड थ्रू P ऑफ the ellipsoid sigma x square upon a square is equal to 1 and prove that for Pg3 where G3 is the point where normal chord through P meets xy plane, then P lies on the cone and this is the equation of the cone.
So we have to find out length of the normal chord through P of the ellipsoid through point P, and prove that if it is equal to 4pg3, where g3 is the point where the normal chord through P meets xy, means z is equal to 0, then P lies on the cone this. सो P को हम मान लेते हैं अल्फा बीटा कोऑर्डिनेट्स हैं, और यहाँ एलिप्स दिया गया है सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो जब अभी हमने आर्टिकल किया था उसमें हमने देखा था इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द गिवन एलिप्सॉइड। एलिप्सॉइड इस फॉर्म का है एट पी अल्फा बीटा गामा, it is given by x minus alpha upon p alpha upon a square is equal to y minus beta p beta upon b square is equal to z minus gamma upon p gamma upon c square is equal to r. Let's say this, और जहाँ पर 1 upon p square है alpha square upon a4 plus, so from here we can find out point xyz, so that is, let's say, another point q, and coordinates of q on the normal 1 are x will be p alpha r upon a square plus alpha. Similarly, y will be p beta r upon b square plus beta, and z will be p gamma r upon c square plus gamma, and r is the distance of q from p. R is PQ, distance between P and Q. Q lies on the given ellipsoid and P also lies on the ellipsoid. So PQ is a chord on ellipsoid because this lies on ellipsoid. And in the question it is given that P lies on ellipsoid. Then we can say that this point, which is Q, satisfies the equation of conicoid. It means x square upon a square, so 1 upon a square in place of x, alpha plus p alpha r upon a square whole square plus 1 upon b square beta plus p beta r upon b square whole square plus 1 upon c square gamma plus p gamma r upon c square whole square is equal to 1. Now we open the square and collect the terms. So first we collect the terms of r square, then r, and then constant. So r square will come from here, from this term and from this term. So 1 upon a4 will be there, and r square we have taken common, and p square also we take common. So p, because p is also there in each case, so p square r square common, alpha square upon a4 plus, similarly from here next term beta square upon b4 plus gamma square upon c4. So these are the terms of r. Now when we multiply these two twice of r p, this we can take common, and then this comes 1 upon a4 and alpha square
because we are multiplying this and this, plus beta square upon b4 plus gamma square upon c4. Now we take constant terms, which comes from first term of this alpha square upon a square plus beta square upon b square plus gamma square upon c square is equal to 1, and this we know is equal to 1 upon p square. So we put r square, p square, alpha square upon a4 plus beta square upon b4 plus gamma square upon c4 plus 2rp upon p square plus alpha square upon a square plus beta square upon b square plus gamma square upon c square is equal to 1. And in the question it is given this is equal to 1, because in the question it is given sigma x square upon a square is equal to 1, and alpha beta gamma point will lie on this, so sigma alpha square upon a square is equal to also 1. So this is equal to 1 and this will cancel out, so we get r square p square alpha square upon a4 plus beta square upon b4 plus gamma square upon c4 plus 2rp. It will cancel out, so 2r upon p is equal to 0. P and Q, both the points, they lie on the conicoid. Now from here we can find out r. This r will go, r is equal to 0 and r is equal to, and that v is not useful because r is the length between PQ, length of chord PQ, so it means P and Q are coinciding, which is not the case. So r is equal to minus 2 upon into alpha square upon a4 plus beta square upon b4 plus gamma square upon c4, and this is the length of the chord PQ. And as we have done one example, we had seen PG3. PG3 was minus c square upon p. This part also you have to do in the examination if question comes like this. So the example which we did should be included here, and this gives Pg is equal to minus c square upon p, and it comes from there that equation of normal is x minus alpha upon p alpha upon a square, y minus beta upon p beta upon b square, z minus gamma upon p gamma अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर, और इसमें जब हम एक्स वाई को ज़ीरो रखते हैं, जेड को ज़ीरो रखते हैं, सो थर्ड टर्म से जब जेड ज़ीरो रखा सो वी गेट PG3 जो कि माइनस सी स्क्वायर अपॉन पी हमें ऑब्टेन होता है. सो दिस इज़ फ्रॉम देयर. इट्स गिवन इन द क्वेश्चन दैट PG3 where G3 is the point where the normal chord through P meets the xy plane, means when z is equal to 0. So when we put z is equal to 0 we get this, and it is given that PQ is equal to 4PG3. So PQ हमारे पास वैल्यू है this value, and we have PG3 also this. So we use this expression. So PQ is minus 2 upon PQ alpha square upon a4 plus beta square upon b4 plus gamma square upon c4 is equal to minus 4c square upon p. अब इसे सिंप्लीफाई कर लें क्रॉस मल्टीप्लाई करके, एंड देन वी गेट 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, माइनस कैंसिल हो गया, सो वी गेट 2c square into, and this p also,
this gives p square. Alpha square upon a4 plus beta square upon b4 plus gamma square upon c4 is equal to, what we did, we multiplied it, is equal to 1 upon p square, which is from here. And p square is how much? Alpha square upon a4 plus beta square upon b4 plus gamma square upon c4. This we did in the article and here also. So now we collect the terms of alpha square upon a6 into 1 upon b square into 1 upon c square. This comes from here when we multiply. So this is 6. So now we take common. Alpha square upon a4. So 2c square minus 1 upon a square. Or we make it 6 and we write it plus beta square upon b6, 2c square minus b square plus gamma square upon c6, 2c square minus c square is equal to 0. Now we take locus of p, alpha, beta, gamma. Locus of p, alpha, beta, gamma is x square upon a6, 2c square minus a square plus y square upon b6, 2c square minus b square plus z square upon c4, because c square into c6, so this is c4 is equal to 0. So this is what we had to do, hence proved. Next example is, if a length PQ be taken on the normal at any point P of the ellipsoid such that PQ is equal to lambda square upon P, where lambda is constant and P is the length of the perpendicular from the origin to the tangent plane at P, the locus of Q is this.
सो हेयर हमें कॉर्ड दिया गया पी क्यू बी द टेकन ऑन द नॉर्मल एट पॉइंट पी ऑफ द ellipsoid ये दिया गया सच दैट पी क्यू इज दिस मच, lambda is constant and p is the length of the perpendicular from origin to the tangent plane. Locus of q is this. So p alpha beta gamma point है conicoid पर, and equation of the given ellipsoid जो कि normal की है, the equation of normal to the given ellipsoid, and given ellipsoid क्या है, sigma x square upon a square is equal to 1. So ये होगी is x minus alpha upon p alpha upon a square is equal to y minus beta upon p beta upon b square is equal to z minus gamma upon p gamma upon c square is equal to pq, which is equal to r से, and this is equal to lambda square upon p. ये गिवन है क्वेश्चन में. या सो lambda square upon p. कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू आर, अगर इसे लें क्या होंगे, यहाँ से निकालेंगे. सो दिस विल बी p alpha lambda square upon a square p plus alpha beta plus p beta upon into lambda square upon b square into p gamma plus p gamma lambda square upon c square p. So pp will cancel out, so this becomes alpha plus alpha lambda square upon a square beta plus beta lambda square upon b square gamma plus lambda square into gamma upon c square. This is point q. Now let's say q is x1 y1 z1. So ये वैल्यू x1 की हो गई, y1 की हो गई, z1 की. अब यहाँ से हम अल्फ़ा निकाल सकते हैं. x1 इज इक्वल टू अल्फ़ा कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाता है अल्फ़ा इज इक्वल टू ए स्क्वायर x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर. तो बीटा होगा बी स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, और गामा होगा सी स्क्वायर z1 अपॉन सी स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर. सो ये अल्फ़ा बीटा गामा जो कि कोऑर्डिनेट्स हैं पी. अब क्योंकि पी भी इलिप्सॉइड पर लाई करता है, सो पी अल्फ़ा बीटा गामा दिस लाइज ऑन इलिप्सॉइड. तो जो कोऑर्डिनेट्स हमें मिले हैं वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. सो अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और इससे मिलता है हमें ए स्क्वायर x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर. ये वैल्यू थी अल्फ़ा की. सो वी गेट दिस ए x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा था, प्लस बी स्क्वायर y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर
whole square plus c square z1 square upon c square plus lambda square whole square is equal to 1. इसलिए हम लोकस ऑफ क्यू निकाल सकते हैं. द लोकस ऑफ क्यू इज क्यू क्या है, x1 y1 z1. इसकी जगह हम x y z रख देंगे रिस्पेक्टिवली. सो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर होल प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर z स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई, हेंस प्रूव्ड. नाउ वी सी नॉर्मल्स फ्रॉम ए गिवन पॉइंट टू एन इलिप्सॉइड. नॉर्मल्स फ्रॉम ए गिवन point to an ellipsoid. And two more points we will discuss. So equation of the normal at P. P is a point. Equation of the normal at P to the ellipsoid. ये इक्वेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं. तो एलिप्सॉइड हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. दिस इज इक्वेशन 1. सो नॉर्मल इज एक्स माइनस अल्फा अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा से और आर वी से. इफ दिस नॉर्मल विच वी डिनोटेड बाय इक्वेशन 2 passes through a given point x1 y1 z1 passes through x1 y1 z1, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई करेगा. सो देयरफॉर x1 माइनस अल्फा अपॉन ए स्क्वायर y1 माइनस बीटा अपॉन बी स्क्वायर एंड z1 माइनस गामा अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा. सो यहाँ से हम x1 y1 z1 की वैल्यूज़ एंड फिर उसकी हेल्प से अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं. सो x1 इज इक्वल टू अल्फ़ा लैम्डा अपॉन ए स्क्वायर एंड यहाँ से अल्फ़ा कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर प्लस लैम्डा अपॉन ए स्क्वायर. सो अल्फ़ा इज इक्वल टू ए स्क्वायर x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा. इसी तरह हम बीटा लिख सकते हैं बी स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस लैम्डा एंड गामा इज सी स्क्वायर z1 अपॉन सी स्क्वायर प्लस लैम्डा. लेकिन जो पॉइंट P है वो कोनिकॉइड पर भी है तो वो उसे भी सेटिस्फाई करेगा. सो P पॉइंट lies on conicoid 1. सो इसे सेटिस्फाई करा मीन्स अल्फा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. अब ये अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यूज़ इसमें सब्सटीट्यूट कर दें. सो ए स्क्वायर x1 होल स्क्वायर अपॉन a square plus lambda and here we have a square also, so this will cancel out. So this gives
first term we take, it comes a square x1 square upon a square plus lambda. So similarly if we calculate, this becomes a square x1 upon a square plus lambda plus b square y1 upon b square plus lambda plus c square z1 upon c square plus lambda is equal to 1. Now we see this equation is in, and this is square. So this equation is in 6th degree of lambda. It means it gives 6 values of lambda, and for each value of lambda we can have a point. So 6 points. For each value of lambda we get a point. Say alpha, beta, gamma on ellipsoid 1, एंड उस पर नॉर्मल जो होगा वो पास थ्रू होगा पॉइंट x1 y1 z1 से. द नॉर्मल एट विच passes through the given point x1 y1 z1. तो 6 पॉइंट्स हो गए इलिप्सॉइड पर. There are 6 points on an ellipsoid. The normals at which pass through a given point, or we can say 6 normals can be drawn to an ellipsoid from a given point. तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, that how many normals from a given point to an ellipsoid. So 6 normals can be drawn to an ellipsoid from a given point. Now cubic curve through the feet of the normals. Cubic curve through the feet of the normals. तो जैसे अभी तक हम कई बार कर चुके हैं, अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यूज़ निकाल चुके हैं, तो उन्हें हम एज इट इज़ लेते हैं कि अगर इफ़ द नॉर्मल एट पी पॉइंट हम ले रहे हैं अल्फ़ा बीटा गामा टू द इलिप्सॉइड, और पॉइंट हम जो इलिप्सॉइड है दैट इज़ sigma x square upon a square is equal to 1 passes through the point अभी हमने x1 y1 z1 पॉइंट लिया था. here we are just writing it in different way. passes through the point x1 y1 z1, देन अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं. अल्फ़ा इज इक्वल टू ए स्क्वायर x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा, ये भी किया हमने. बीटा इज़ बी स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस लैम्डा. गामा इज़ सी स्क्वायर z1 अपॉन सी स्क्वायर प्लस लैम्डा. अब हम कर्व कंसीडर करते हैं जिसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं
Now consider the curve whose parametric equations are x is equal to a square x1 upon a square plus lambda, y is equal to b square y1 upon b square plus lambda, z is equal to c square z1 upon c square plus lambda. So this is equation 1, where lambda is a parameter and lambda is having 6 values. जो अभी हमने पिछले आर्टिकल में किया था, एंड हर एक वैल्यू of lambda gives a point on the curve. Now we see the point of intersection. Point of intersection of the curve 1. Curve 1 is parametric curve. This curve with any plane and plane की इक्वेशन हम ले लेते हैं ax plus by plus cz plus d is equal to 0. तो यहाँ पर हम ये वैल्यूज रख देंगे एक्स वाई जेड की. सो a इंटू ए स्क्वायर एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस बी इंटू बी स्क्वायर वाई वन अपॉन बी स्क्वायर प्लस लैम्डा. This is value of y plus c z. Z is c square z1 upon c square plus lambda plus d is equal to 0. This is equation 2. और ये जो equation 2 है ये cubic है, cubic in lambda, and therefore the curve 1 meets the plane given above, which is ax plus by plus cz plus d in 3 points, and therefore the curve 1, that is the parametric curve, is a cubic curve. Cubic curve. इसलिए हम कह सकते हैं hence the 6 feet of the normals that can be drawn to an ellipsoid from a given point are the intersection of a certain cubic curve with the ellipsoid. Now next is cone through 6 concurrent normals.
तो यहाँ हम शो करेंगे कि क्यूबिक कर्व जो है, जो कि थ्रू द फीट ऑफ द 6 नॉर्मल्स फ्रॉम ए गिवन पॉइंट टू एन इलिप्सॉइड दैट लाइज ऑन द कोन थ्रू द अबव 6 कंकरेंट नॉर्मल्स, ये हमें शो करना है। सो अभी हमने प्रूव किया कि किसी पॉइंट से फ्रॉम एनी पॉइंट x1 y1 z1 6 normals can be drawn on the ellipsoid. To an ellipsoid, and ellipsoid है sigma x square upon a square is equal to 1. Now any line through this point क्या होगी? Equation of any line through x1 y1 z1 is x minus x1 upon L is equal to y minus y1 upon m is equal to z minus z1 upon n. और अगर ये लाइन नॉर्मल है टू द गिवन इलिप्सॉइड, तो अभी हमने अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यूज़ से LMN भी फाइंड आउट किया था आर्टिकल में। L इज इक्वल टू पी अल्फ़ा अपॉन ए स्क्वायर DC's फाइंड आउट किए थे। इफ दिस लाइन इज ए नॉर्मल to the given ellipsoid, so अभी हमने DC's फाइंड आउट किए थे। DC's आर L इज इक्वल टू पी अल्फ़ा अपॉन ए स्क्वायर, देन एक्चुअल भी फाइंड आउट किए थे M इज इक्वल टू पी बीटा अपॉन बी स्क्वायर, N इज इक्वल टू पी गामा अपॉन सी स्क्वायर। एंड अभी हमने अल्फ़ा बीटा गामा अभी पिछले आर्टिकल्स में फाइंड आउट किया है। अल्फ़ा इज ए स्क्वायर x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा, बीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस लैम्डा, गामा इज इक्वल टू सी स्क्वायर z1 अपॉन सी स्क्वायर प्लस लैम्डा। सो वी कैन से दिस इज इक्वेशन 1, this is 2, this is 3 and this is 4. Now from 3 and 4 we can say we have L is equal to P upon A square into अल्फ़ा की हम वैल्यू रख दें A स्क्वायर x1 अपॉन A स्क्वायर प्लस लैम्डा, M की वैल्यू होगी P अपॉन बी स्क्वायर इंटू बीटा बी स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस लैम्डा, एंड n इज इक्वल टू p अपॉन c स्क्वायर, देन दिस इज c स्क्वायर z1 अपॉन c स्क्वायर प्लस लैम्डा। यहाँ से हम लिख सकते हैं p x1 अपॉन l इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस लैम्डा। इसी तरह लिख सकते हैं पी y1 अपॉन m इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस लैम्डा, एंड थर्ड इज पी z1 अपॉन n इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस लैम्डा। सो हमने अभी जो फाइंड आउट किया पी x1 अपॉन एल, पी y1 अपॉन एम, पी z1 अपॉन एन फाइंड आउट किया। सो अगर हम कुछ मैनिपुलेशन करें पी x1 अपॉन एल इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस पी y1 अपॉन एम इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस पी z1 अपॉन एन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये रिमेंबर करना पड़ेगा। सो दिस गिव्स
P x1 upon L is a square plus lambda into b square minus c square plus b square plus lambda into c square minus a square plus c square plus lambda into a square minus b square. And if we open it, it is a square b square, so this cancels out, and minus a square c square will cancel out. Lambda terms are lambda b square, so lambda b square will cancel out, minus lambda c square, this will cancel out, so this is equal to 0. Now from equation 2, and let's say this is 5, from equation 2 and 5, हम कह सकते हैं कि normal 2 lie on the cone. Normal given by equation 2 lies on the cone. Px1 b square minus c square upon, here it was L, we can put from the equation x minus x1 is equal to plus py1 c square minus a square upon here it will be y minus y1 plus pz1 a square minus b square upon z minus z1 is equal to 0. Or we can say x1 b square minus c square, because p will cancel out, upon x minus x1 plus y1 c square minus a square upon y minus y1 plus z1 a square minus b square upon z minus z1 is equal to 0. So the 6 normals to the given conicoid from the point x1 y1 z1 lie on the cone, and this is the equation of cone. 6 normals to the given ellipsoid, hence ellipsoid from the point x1 y1 z1 lie on the cone given by equation 6, which is of second degree. Cone 6 of second degree. This equation is of second degree. और अभी हमने पिछले आर्टिकल में पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ द कर्व थ्रू द फीट ऑफ द 6 नॉर्मल्स देखी थी. वी नो दैट द पैरामेट्रिक इक्वेशंस of the curve through the feet of the six normals as, ये इक्वेशन अभी हमने लिखी थी, x is equal to a square x1 upon a square plus lambda
y is equal to b square y1 upon b square plus lambda, and z is equal to c square z1 upon c square plus lambda. इसमें आपको बहुत याद करने की भी ज़रूरत है कि कहाँ क्या यूज़ करना है. So sequence of steps may be remembered, though generally question comes, but article may come in the form of question. So therefore we need to learn the articles also. Lambda एक पैरामीटर है. Now these values of x, y, z, they satisfy the equation of cone, which is given by equation 6 through the above 6 concurrent normals. और अगर हम ये वैल्यूज़ कोन की इक्वेशन में रख दें तो ये हम कंफर्म कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं. तो हम ये मानते हैं कि दे आर सेटिस्फाइंग विदाउट क्रॉस चेकिंग इट. इफ़ यू वांट टू क्रॉस चेक, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़ इन द इक्वेशन ऑफ कोन, values of x, y, z in cone, and see that it is satisfying. So we say evidently by substitution we can see these values of x, y, z satisfy the equation of cone given by equation 6. Through the above 6 concurrent normals, and this can be checked for each value of lambda. Hence we can say the cubic curve through the feet of the 6 from a given point to an ellipsoid lies on the cone through the above 6 concurrent normals. अब एग्जाम्पल्स करेंगे इनके ऊपर बेस्ड.